नमस्कार सर. 10 डेज वर्कशॉप खूप चांगला राहिला सर हा. खूप तुम्ही चांगले चांगले एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन बोलावले आणि आमच्या नॉलेजमध्ये खूप भर पडली आणि एक आम्हाला दिशा मिळाली सर. खूप खूप धन्यवाद सर. आणि सकाळी सकाळी वाघ सर रोज खूप आनंदाने सर्वांचं स्वागत करायचे. खूप चांगलं वाटायचं. खूप खूप धन्यवाद सर. धन्यवाद मॅडम, खूप खूप धन्यवाद. बरं आता आम्ही वाटलं. थोडं मिस करू उद्या. आपले सर जे रिसोर्स पर्सन होते जसे की जगदीश जाधव सर आहेत, तर त्यांचं जे रिसर्च मेथोडॉलॉजीच्या संदर्भात जे सेशन झालं फार आवडलं. नाही, खरंच आपल्याला रिसोर्स पर्सन खूप चांगले भेटलेत. हो हो, खूप छान सर. आपण जे कोऑर्डिनेट करत आहात ते तर उत्तमच. हो, खूपच ते ना. चांगलं सर. अगदी वेळेवरच तुमचं सेशन सुरू होतं YouTubeला पण आणि खूपच चांगलं अरेंज केलंय तुम्ही सर्वांनी. खूप खूप धन्यवाद सर. हे खरं तर आणि याच्यात खूप तुमचा कौतुक वाटा खूप मोठा करण्यासारखं आहे. आहे. सहभागी जे आहेत ना, तुमचा वाटा खूप मोठा आहे यामध्ये. तुमच्यामुळे खरं तर हे करता आलं आम्हाला. नाही कारण तुमच्यामुळे सर, कारण तुम्ही अरेंज तुमचा केलं म्हणून आम्ही आहोत. जो रिस्पॉन्स आहे, त्या रिस्पॉन्स मुळे आम्हाला एवढा उत्साह येतो या सगळ्या गोष्टी करण्यात. नियोजन खूप छान होतं. नियोजन बढिया एकदम. वेल डन. प्रिन्सिपल साहेब बडी नमस्कार. अभिनंदन तुमचं. खूप छान आयोजन. खूप खूप धन्यवाद. बढिया. तर असं या प्लॅटफॉर्मवर आपल्यासारख्या लोकांना भेटून खूप आनंद होतोय की हो, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म कधी कधी मोटिवेट खूपच होतोय आम्ही. उपयोगी पडतो सर. नक्कीच मॅम, नक्कीच. आणि मुख्य म्हणजे सर तुम्ही फुकटच ठेवला आहे. त्याच्यामुळे तर किती किती खूपच फायद्याचं झालं आहे. यापुढे असाच विचार राहील, जास्तीत जास्त फ्री ऑफ कॉस्टच ज्ञान हे फ्रीच वाटलं पाहिजे मॅडम. हो बरोबर आहे सर. पण आता बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतो. ड्युटीचे पैसे पण आपण घेतोय, आता ज्ञान हो वाटण्याचं काम आपण ते तरी फ्री करूयात. बरोबर आहे सर. वीडियो कॉल करो मुझे, वीडियो कॉल करो मुझे. यस यस यस, वही जो बाजू की साइड है ना, वहां पे देखो एक
आप वहीं से आ रही है क्या मैम? देशमुख सर. ओके. गुड मॉर्निंग सर. पांडे सर. वो कैसे ऑन होगा वीडियो? अच्छा हो जाएगा ना बस. Good morning, sir. Good morning. How are you? I'm fine, sir. Good morning to everyone. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. गुड मॉर्निंग. Very good morning. बनकर सर, हा सर. लिंक आपली त्या ग्रुपला जाऊ द्यात, लगेच सुरू करूयात. पाठवली. ओके. विदिन अ मिनिट विल स्टार्ट. No issue. I'm fine.
वाघ सर स्टार्ट करूयात. शिंदे सरांना एकदा विचार. हॅलो वाघ सर स्टार्ट करून दे ना. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. सुरू करू सर. Sure. Thank you. Good morning, all of you, and welcome to the final day of our online National Research Methodology workshop. I hope you have been finding the sessions insightful and enriching so far. Yesterday, we delved into hands-on training on SPSS, understanding social research stages, and understanding concept, variable, and hypothesis in the first, second, and third session, respectively. Our experts provided incredible insights, and I'm sure many of us left inspired with new ideas to implement in our research project. Today, also, we have an exciting lineup of sessions that promise to take us in deeper into publication process, field research, and sampling design in first, second, and third session respectively. So stay tuned for the same, and I know you would not be miss it. For the first session of our final day, we are honored to have with us an esteemed academician and dedicated researcher, Dr. Banshidhar Pandey sir, Professor Mahatma Gandhi, uh, Kashi University, Varanasi, to enlighten us through publication process and field research in the first and second session. Sir, on behalf of Sri Saraswati College of Social Work, Washim, our enthusiastic participant, organizing team, I, Ashok Wagh, warmly welcome you on this digital platform. Dear participants, we have experienced in the last enriching session that was a case study in research conducted on 13th January. I think we should start here directly. I request Honorable Sir, please enlighten us through the topic. Thank you, sir. Thank you, over to you. Thank you so much. Good morning, all of you. And again, it is very nice to see all of friends again of our fraternity. First of all, again, I would like to thank Ashok ji, Arvind ji, Professor Sinde Sahab, and all the faculty members and the staff of Saraswati College Wasim for providing me that type of opportunity to interact with the fraternity members, though it is on online platform and digital platform, but it is very nice to interact all the person and all the people of the same fraternity. I'm not any scholar, I'm not anything, I'm just a simple student of social work and try to practice what I have learned from field and from my teachers. And I learned a lot from everyone, and I can say surely that when I was going through the different topics to share with you, I learned a lot of things. So thanks Ashok ji and Arvind ji for forcing me to learn something more and more and more in this regard. And it is a beautiful opportunity. So the first session, which is on the topic publication process. Nowadays, I can say in the 21st century, the academicians are more interested in publication and writing
and reading, it is our main job. Uh, I just remembering the days when I joined the teaching in the last decade of 20th century. No one was as keen to publish papers or books or anything. They always talk about other things. But nowadays, when a student entered into the research for the PhD even, he or she is more interested in researches, publishing papers, writing articles, books, and etc. And when the digital platform came into existence, actually, after the COVID period, it is more visible for us or more accessible for us. The many publication on digital platform, the YouTube channels, and various things, and it makes a dramatic change and drastic change in the academic fraternity. So the question arises: what is publication, and what are the process of publication? What is the and I have gone through the schedule which was meant for you people. And I have seen that academic writing, research proposal writing, and many things were there. It is very useful for us actually when we are in the teaching fraternity or we are planning to enter in the teaching life. So start with some basic concepts, and then we will go through the publication criteria, the types of publication, and the process of publication. What are the and how we get our papers published in different journals and articles. Sorry, in periodicals or anywhere. Uh, when we talk about publication, publication is the act, basically nothing than the act. And what type of act? Making information or stories. That is, it is act of making information or stories. If you are acting to make or to collect some information and stories, and then it is the act to make available to the people in a printed or electronic form or digital form. So, what is the meaning of publication? In nutshell, it is the act of making information or stories available to people in a printed or electronic form. Many times you learn from the journalist that I am making a story, I am doing a story, मैं एक story कर रहा हूँ. It story means the he is or she is going to publish something for the public either on printed form or electronic. We can understand it better through examples. And what is the example of publication? A book, many book. Book is type of a novel, book in the type of textbook, book in the type of reference book, and book in the type of any proceeding or anything. The other one is a magazine, periodical magazine, monthly magazine, weekly magazine, annual magazine, half yearly magazine, or newspapers like the Times of India, the Hindustan Times, the Dainik Jagran, or any newspaper of regional or any national language. Or the documents we talked about earlier. What is document made by the any government official or by any government department through the gadgets, through the reports, or anything, or proceedings of any conference seminar which was organized by any government department or government official. And these are the books, magazine, newspaper, or documents. And this is the information or stories which is going to be published or which are published. It is basically what the information or the stories. So the act of giving the public details about a particular thing is a publication. Once again, I am underlining the act of giving the public details about a particular thing is publication. Publication may be of two forms in modern days, either in the print form or digital form. When we talk about the print form, it is a printed book, hardbound, or
paperback, the magazine, printed magazine, or the newspapers, the daily newspaper, which we always start our day with, the documents which are in the printed form, and in the digital form, we have the digital journals, digital books, digital information, or many things digitally. We are living in the digital era, and there are digital books, e-books, e-libraries, e-journals, e-newspapers. So it is always a digital publication in the form of PDF or anything. So digital publication. If we talk about the digital publication, we all know that the digital publication industry has only been around since 2010. You can say the first decade of the 21st century, the digital publication industry has grown. And now we are many digital industry, digital publication, and everyone is going through the digital publication when we are paperless. So two forms of the publication, one is print and second one is digital. Now let's come on the type of publication. Then one of the type of publication is the research publication. And for the academician, research publication is quite interesting, important, and very much essential. The publication which makes scientific information publicly available. The scientific information which are publicly available. And the publication related to them are known as the research publication. Scientific information means the information gathered through the scientific method by the scientific way, or any research, since research is a scientific inquiry, so any research publication is known as the scientific information. So if we are gathering the scientific information, if we are collecting anything scientifically, it is known as scientific publication or research publication. It allows the rest of the academic audience to evaluate the quality of research. Again, it gives chance, or it allows the academic fraternity or the audience to evaluate the quality of the research work or the publication. That's why we rate the publications 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star. Many journals are the indexes, the H index or the other index. So these are the criteria of evaluation of the quality of the research or the publication. So it allows the academic audience to evaluate the quality of research work or the quality of research writing or the publication or the scientific information. So we have the various type of other publications as well, as like scholarly journals, the journals in which the scholars, the academicians are used to write the articles or research papers is known as the scholarly journal. The scholars, the research scholars, the academician, the researchers, or the anyone who is known to be an intellectual used to write in that type of journal, in the journals, and that journal is known as the academic or scholarly journal. The second thing is professional or trade publication. Professional or trade publications means the publication which is related with any trade. For example, if you see the Economics Times, it is a related to the economics, commerce, trade. So it is a trade publication, or anything which is related to engineering or technology or anything is known as the trade publication, which is related directly with the trade or any profession. Any publication for the medical practitioners, for the medical professionals, again, it is a professional publication. So professional publication or trade publication is little bit different from the other publication. The another one is popular or general interest magazine.
some general interest magazine. Uh, if I take one name, that is a magazine Yojana in English and Hindi, and many reader and the readers are from the various disciplines. We can say the another magazine that is it is weekly. One magazine is India Today. Many people read this, and the readers are from various type of backgrounds. So popular or general interest magazines are the magazines or the any publication which the people or the public from various discipline or various background interested, or the readers are from the various background. Now again come to some classifications or types of the publication. If we talk about, we can say an important foundation for information searching on an academic level is knowledge how research results are published. And the various types are the articles or the journal articles, the books, that is the textbook or reference books, encyclopedias, handbooks, dissertation and student thesis, research reports, conference proceedings, official publication, and etc. Many. But if I said that knowledge about how research results are published, then we should talk about the types. And we can publish it in articles or journal. Articles or we can publish the research work in the type of articles or journal articles. Articles were journal articles. That is if we are writing on any topic and on any pertinent subject, and the different dimensions are covered in this thing, is known as the articles. We have various forms of articles. Original articles, the one is original articles. And the original article is known as the research results from the first time any research has been done and its results are getting published first time by the author or the researcher. It is known as the original article, the original text. Original text has written by such and such person. This research has been conducted by such and such person. So it is original articles. So the type of article, the first one is original articles. Second one is the review articles. Review articles, there are many articles on the same topic. For example, child labor. And many people has written in the form of books, articles, research reports, conference proceeding on these things. If anyone tries to review various available articles and then he concludes something on the basis of this review, this one is known as the review article. Or review article, sorry. It is the critical evaluation of the other previously published studies. One thing should be noted here, that is the critical evaluation, not only the evaluation or not only the critics. It is a critical evaluation of others' earlier published works or studies or articles. So if we critically evaluate the previously published research work or studies or articles or any study, it is known as the review article. Review article is also quite popular. Book review is different than the review articles. Book review is a different thing and review articles are the different. Another type of article is a theoretical article. हम कहते हैं सैद्धांतिक लेख या आलेख. And it aimed at developing new theories based on existing research. To develop the new theory
and which is based on the earlier existing researches. If any writer or any researcher tries to develop a theory which is new, but on the basis of existing research, this is known as the theoretical article. Theoretical, if we have 10 theories, existing theories on any topic, for example, on social change, many theories, and if any author read all the theories and then on the basis of few or one theory, he or she tries to develop a newer theory, this is known as the theoretical article. Theoretical article is a very rigorous work and it takes a lot of time. So theoretical article is the other type of article or journal article. We can count more types of articles or journal articles, but since time doesn't permit me to talk more about this, I'm just skipping and going through the section of books. If we are saying book, there are two types of books traditionally, the textbook and the reference book. Textbook which is based on any syllabi or any topic or anything with a different chapter. Well, reference book is basically a type of work or research. It is a type of a piece of research or the theoretical work by the any author. Nowadays, digital book, e-book, there are many types of books. Because if we take monograph as a type of book, again it is a different book. So books writing is also a type of publication. Writing a book is a very tedious job. If we are writing a reference book, then it must include the every content related to a subject matter. Textbook, it is a different portion of the textbook. For example, if we take social case work, group work, community organization, there are three portions of any textbook. So case work is a different portion, group work is a different portion, community organization is a different portion. There may be one chapter or two chapter or three chapter or more than. So books, which is divided in chapters, textbook, divided through the different dimension as the reference book, the digital books, the e-books, the monograph. There are a variety of types of the book. Now the next section is encyclopedias. What is encyclopedia? If we say he or she is an encyclopedia of that subject, it means he or she knows everything about the subject matter. Same about the encyclopedia. Encyclopedia is a work, even the research work or any study that contains information of all branches of knowledge. Encyclopedia contains information of all branches of knowledge. If the encyclopedia of social work, it contains every information on the all branches of the social work, or it treats comprehensively a particular branch of knowledge. If the encyclopedia of medical social work, the area is restricted to the medical social work only. Then it contains all the information about the all branches of medical social work. So what is it? All branches of knowledge or treat comprehensively a particular branch of knowledge, usually in articles arranged alphabetically, often by subject. In encyclopedia, the articles are usually arranged in alphabetic manner. A, B, C, D, E, F, G, H, or if in Hindi, A, I, E, or in any other language, what the alphabetics are. Arrange alphabetically. It means the word starts from A, come first, the word starts from B, then comes second, and then C, then D. No matter which thing is most important, more important, or less important. Important thing is the alphabetics.
So encyclopedia usually arranged in alphabetically, often by subjects or by subjects, the subject matter. So encyclopedia is what? It is a work that contains information of all branches of knowledge or treat comprehensively a particular branch of knowledge. Usually, the articles of the encyclopedia arranged alphabetically, often by subjects. So, this is the encyclopedia. Encyclopedia of Social Sciences, Encyclopedia of Social Work, Encyclopedia of History, Encyclopedia of Geography. There are various encyclopedias. Encyclopedia of a branch of knowledge. That is Encyclopedia of Medical Social Work, Encyclopedia of Child Development, Encyclopedia of Women Development, Encyclopedia on Aged, Encyclopedia of Liver Welfare, Encyclopedia of Personal Management, any type of encyclopedia, but it contains everything of knowledge. But what is the problem with encyclopedia? It is not the depth one, it is the surface one, or you can say that it contains the basic knowledge and informations regarding that branches of the discipline, that branches or the discipline. Third thing, the next thing in the types of publication, uh, a handbook. Handbook or manual are very common, but very few people knows the exact meaning of the handbook. Handbooks are the book, handbook or handbooks or a book or books that contains instructions or advices about how to do something or the most important and useful information about a subject. If you have a laptop, if you purchase a laptop, you get a handbook related to that laptop. So handbook is a type of manual that contains instructions or advices with how to do anything or something regarding this. And or the most important and useful information related to that topic or subject or anything. So handbook again is a very important type of publication. If you talk about any gadgets or any electronic devices or any electronic machine, you will find a handbook of that gadget or machine. So, because it contains all the instructions, handbook in the print form, handbook in the e-form, handbook in the digital form. So, handbook is also a very good type of publication, and it is very handy and useful for the user of that machine or manual. Or somewhere written as a handbook of the sociology. It means it contains every instructions and advice regarding that basic discipline. A handbook of social work, a handbook of physics. So these handbooks are the basic informations or instructions regarding that particular discipline. So handbook is different from the encyclopedia. Encyclopedia contains every information related to branches, while handbooks contain instructions and advices on it. And instructions or advices regarding the most important and useful thing of that discipline or subject. Next type of publication is dissertation or student thesis. Dissertation of postgraduate students, master's students, and earlier the MPhil students. Dissertation, which is
Basically, research report, how to write the research report, how to do the research. We always taught our students how to write the dissertation and the student thesis. Those students who are doing their PhD, they have to write their thesis or dissertation in this regard. And again, it is a format. That is a chapter of introduction, review of literature, the chapter of methodology, the data analysis chapter, the result chapter, the discussion chapter, or the model chapter. So, student thesis, which is divided in various chapters as per the need of the research and as per the need of the researcher according to their discipline, according to their subject. Then a research report. And research report is something different from the student thesis. Research report is a document that describes the findings, the data, and the processes of the research study. And it must be objective as well as accurate. So, research report is different from the dissertation and student thesis. It is more objective and more accurate than the student thesis or dissertation. It is a document that describes the findings of the research regarding the data, how the data collected, what was the methodology, the quality of the data, the quantity of the data, and everything related to the data. And the process of the study, how that study was conducted since beginning to the end. It must be objective. Subjectivity should not be involved in the research report. So research report should be objective and accurate. Then the next type of publication is conference proceeding. If anyone organizes a conference, then it is the responsibility of the organizer to publish the proceeding of the conference. What happened in the conference? And what discussions were there? What were the declaration or the conclusion or the suggestions, discussions, the new things, the new ideas? It must be in the conference proceeding. Then the next one, which is the last in this category, that is the official publication. Official publication basically is a document and it is produced by an official body. Official body like ministry or the department or any cell which is formed officially by the government or the any other body and made available to the public. If it is not available to the public, it is not called the official document. Document is always available for the public. So official publication is a document produced by an official body and made available to the public. For example, government gazettes, official journals, and official bulletins, and official diaries, because these all are available for the public. So official publication is a document provided by official body and it is made available to the public. So it is official publication. If any act or any law has been formed, it has to be published for the public. It is notified for the public and then it becomes the public document. It comes in the public. Any policy made by the government and then it documented, then it must be published for the public. Then it will become the official publication or the document. Friends, these are the type of publication as a perspective from the writer. Now, different again another type of classification, and which is from the point of view of the readers.
And what is the types of that? If we talk about the type of publication from the point of view the readers, we have three type of publication. One is the popular publication. पॉपुलर पब्लिकेशन क्या होता है? कोई भी मैगजीन जो सभी के लिए अवेलेबल, बहुत इजी लैंग्वेज में हो, सभी को समझ में आए, और इसकी ऑडियंस बहुत जनरल होती है, इसलिए इसमें मैटर भी बहुत जनरल होता है। ये कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई मैगजीन हो सकती है, बच्चों की मैगजीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये लिखता कौन है? हु राइट दिस? द जर्नलिस्ट और फ्रीलांस राइटर्स। ये स्टोरी जर्नलिस्ट लिखते हैं या फ्रीलांस राइटर्स लिखते हैं, और इनकी स्टोरी पब्लिश होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पब्लिश होती है, प्रिंट फॉर्म में भी होती है। तो ये पॉपुलर पब्लिकेशन है जो पब्लिक के लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। कोई स्टोरी हो, स्टोरी रिटन बाय एनी राइटर, इसका कोई रिव्यू नहीं होता है, और मतलब रिव्यू इसका किसी एक्सपर्ट द्वारा नहीं होता है। यूजुअली इट इज नॉट रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट्स। These stories are stories simply, information simply, and it is for the general public. Therefore, its language is quite easier than the research articles. And for what? To inform and entertain the reader. ये पॉपुलर पब्लिकेशन किस लिए होते हैं? लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए और उन्हें इंटरटेन करने के लिए। कहानियां लिखी जाती हैं, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, इन्फॉर्म करने के लिए और इंटरटेन करने के लिए। कुछ इंटरटेनमेंट आर्टिकल्स कंटिन्यूअसली आते हैं, तो वो होती हैं मैगजीन, न्यूज़पेपर, इन सारे उसमें। तो कुछ होते हैं पॉपुलर पब्लिकेशन। दूसरा एक टाइप, द स्कॉलरली वर्क, the work by the scholars. When the word is scholar includes, you can understand the meaning of scholarly work. Scholarly work is basically the original piece of work. In the टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, इसकी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही साइंटिफिक होती है और टेक्निकल होती है। ये सभी को समझ नहीं आएगी। अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे और सेंसेक्स के बारे में पढ़ेंगे और इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, one could not understand without the proper knowledge or the basic knowledge of the economics or commerce. पहले उसकी बेसिक नॉलेज होनी होगी, तभी समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए स्कॉलरली वर्क होता है, एंड इट इज फॉर ए population which is very technical and scientific, and it is reviewed by the expert. You cannot say that it is not reviewed, it is reviewed by the experts, और इसको रेटिंग भी मिलती है एक्सपर्ट्स की, इसीलिए इसकी बार बार टेस्टिंग होती है। अब इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं। इस तरह के जो पब्लिकेशंस होते हैं उसमें बिबिलियोग्राफी और रेफरेंसेस भी होते हैं। बिना रेफरेंसेस के ये स्कॉलरली वर्क पूरा नहीं होता है, बिना बिबिलियोग्राफी के स्कॉलरली वर्क पूरा नहीं होता है। अगर आपको स्कॉलरली वर्क करना है, देन you have to include the bibliography and references in your writing. और जो भी लिखा है उसके सोर्सेज भी बताने पड़ते हैं, या तो अगर आपने खुद से रिसर्च किया है तो उस रिसर्च की भी वैलिडिटी चेक करनी होती है। सो द स्कॉलरली वर्क। And another type is trade publication, which is not the popular publication, neither the popular publication nor the scholarly work, but it is the combination of popular publication and scholarly work, and very useful for the research within a specific field. किसी specific field में ये research बहुत important होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत यूजफुल, उपयोगी होता है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कॉमन इंटरेस्ट के लोगों के साथ शेयर की जाती है।
जो कॉमन इंड फॉर द जर्नलिस्ट अगर हैं तो उनका अलग पब्लिकेशन होगा, मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं उनका अलग तरह का पब्लिकेशन होगा, इंजीनियरिंग के भी अलग अलग ट्रेड्स के हैं उनके लिए अलग, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलग पब्लिकेशन होगा, सोशल साइंस के लोगों के लिए अलग पब्लिकेशन होगा. It share information between people with a specific industry in order to improve business or field. अगर उन्हें अपने बिजनेस या अपने फील्ड में इंप्रूवमेंट करनी है तो उसके लिए इस प्रकार के पब्लिकेशन बहुत ही महत्व रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ये मार्केट ट्रेंड्स को अपडेट करते हैं. सेंसेक्स कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, कि कौन कौन सी कंडीशन में जा रहा है, अभी मार्केट ऊपर रहेगा या नहीं रहेगा. इस तरह के ब्लॉग्स आर्टिकल्स कंटिन्यूअसली लिखे जाते हैं. अगर आप उसकी वैलिडिटी चेक कर लें और वो अगर वैलिड है तो आप उसके थ्रू बहुत सारी अपडेट इंफॉर्मेशन और ट्रेंड्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, और उस पर अगर वो वैलिड है तो उस पर विश्वास भी कर सकते हैं. अब बात आती है कि इस पब्लिकेशन की प्रोसेस क्या है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द पब्लिकेशन. देयर आर वेरी लेंथी एंड टेक्निकल प्रोसेसेस ऑफ द पब्लिकेशन. और जब हम पब्लिकेशन की बात करते हैं तो बुक्स अलग हैं, रिसर्च आर्टिकल्स अलग हैं, ट्रेड पब्लिकेशन अलग है, स्टूडेंट की थीसिस अलग है. अब सबके पब्लिकेशन के प्रोसेस एक जैसे तो नहीं हो सकते, इसमें कुछ न कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे. You will find the differences between the among the publication of sorry between the publication of book and article. बुक पब्लिकेशन और आर्टिकल पब्लिकेशन के जो प्रोसेस है उसमें कुछ डिफरेंस मिलेगा. What is the process of publication? It is a series of steps. What we say? The series of steps. Series of steps for publishing books or publishing newspaper or publishing any article. So, publication process is a series of steps involved in the successfully publishing of a product. जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो आउटकम है, उसको पब्लिश करने के लिए जो भी प्रोसेस या स्टेप इन्वॉल्व होती है उसी को हम प्रोसेस कहते हैं किसी भी पब्लिकेशन का. इसमें करना क्या होगा? सबसे पहले टू आइडेंटिफाई द नीड टू पब्लिश. व्हाई यू वांट टू पब्लिश दैट आर्टिकल और पेपर और बुक. कोई भी पब्लिशर होता है वो सबसे पहला उसका जो बेसिक इंक्वायरी होती है, व्हाई दिस पब्लिकेशन. जिन लोगों ने बुक्स पब्लिश की हैं, जिन लोगों ने आर्टिकल पब्लिश किए हैं, वो आर्टिकल अगर सबमिट करते हैं किसी जर्नल को या बुक का टाइटल अगर सबमिट करते हैं वो पब्लिशर को, तो उसका सबसे पहला इंक्वायरी ही यही होती है. देयर फर्स्ट इंक्वायरी इज व्हाई दिस publication. It means first to identify the need of the publication, whether it is need of R or not, whether this publication will find the readers or not. क्योंकि इसी के आइडेंटिफाई अगर ठीक से कर लिया तो वो बुक बेस्ट सेलर हो जाएगी, नहीं किया तो फिर ऐसे ही रह जाएगी. It will not find any reader. So the popular books, journals, they first identify the need of the publication. Second thing, the selection of the format. The formats are different of the different journals. There are some differences. So selecting a format, whether it is a type of book, whether it is a type of monograph, whether it is article, whether it is research paper or anything else. So if we are identifying the need for publication, it gives a clear idea about the plan of the publication and the audience. That what is the plan of the publication? First, you identify why this publication, then identify the need for the publication, then getting a clear idea about the plan of the publication. What will the steps of the publication and what will the plan of the publication?
the timeline, the guideline, and many things. And who will be the audience, who will be the reader of this book. Now, the second thing is selecting a format. What is the format? Whether it is a print form or in the e-form or both, in the print form or digital form or in the both form. You will find many journals are on the online platform. They have no print copy. Few you will find that the print copy only, and many you will find that print and digital in both forms and both. So the format of the publication, print or electronic or both. Then the timeline of the publication, or you can say the schedule of the publication. How many times the publication will take, what will be step, when this publication will come out for the public, then whether it will be useful or not, it will be relevant or not. So this is the format of the publication. It comes in the area of format of the publication. And setting up of editorial board. If it is edited book, there must be editor or editorial board. If it is a journal, again it is the editorial board. Again, if you are writing a book, it must be reviewed by some editor. And good publishers always used to take a review before the publication of the document or the book. And the content, next one is the creating content. The content must be reviewed by the others as well. Others means the experts of the field. So the content of the publication must be reviewed by the others. And after creating content creation means creation or giving shape to your ideas or the thoughts or your research. So it is the creation of the content. आपके पास अगर बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी आइडिया है, तो उसको लिख के इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करना, एक जगह पे ले आना, इट इज द कंटेंट फॉर्मेशन. अब उस कंटेंट को कैसे डिजाइन किया जाएगा, किस फॉर्म में लाया जाएगा, ये अलग बात है फिर उसके आगे. Then creating content, then reviewing the content. Reviewing the content, review by the any other author, the publisher, the editor, or by the peer. Means if I'm a professor, then my fellow professors, my fellow colleagues will review my books, and then he will give his expert comment. Before publication, you need to do this. So reviewing, then the editing of the content. Editing, content editing as well as the technical editing. There are two types of editing: content editing as well as the technical editing. Content editing means making changes to the content. The content is not in depth. The content is very scattered, बहुत बिखरा हुआ है, इसे कंसाइज करने की जरूरत है. कंटेंट रेलेवेंट नहीं है, इसको और रेलेवेंस बनाना चाहिए. कंटेंट इज नॉट जस्ट कनेक्टिंग विद द अर्लियर रिसर्चर्स. वो पुराने रिसर्चर्स से कनेक्ट नहीं हो रहा है. ये सारी कंटेंट एडिटिंग होती है. उस कंटेंट को एडिट करना, उस कंटेंट में क्या पहले आएगा, क्या बाद में आएगा, क्या चीजें छूट रही हैं, क्या अधिक हो रही हैं, इसको कहते हैं हम कंटेंट एडिटिंग. Then the technical editing. Technical editing, content editing is the content and the style of the content and the type of the content. Technical editing is the editing of the grammar and other aspect of the content or the matter or the subject matter. Editing the grammatical part,
उसके भाषाई अशुद्धियां, उसके व्याकरण में कोई अशुद्धि रह गई हो उसको ठीक करना, सेंटेंसेस बहुत लंबे हो रहे हैं और जो ऑडियंस है वो इतना लंबा सेंटेंस नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, इन सारी चीजों को तो कहते हैं ये टेक्निकल एडिटिंग। चैप्टर्स जो हो रहे हैं वो डिसबैलेंस है, कोई चैप्टर बड़ा हो जा रहा है, कोई छोटा हो जा रहा है, तो ये सब टेक्निकल एडिटिंग होती है। तो एडिटिंग की जब भी बात होगी तो दो तरह के एडिटिंग की बात होगी, द कंटेंट एडिटिंग एंड द टेक्निकल एडिटिंग। कंटेंट एडिटिंग में जो विषय वस्तु है वो कितनी गहरी है, उसकी कितनी प्रभावशीलता है, इसकी एडिटिंग करेंगे। और टेक्निकल एडिटिंग में उसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में कोई भी बात नहीं होगी, उसके लैंग्वेज, उसके ग्रामर, उसकी स्टाइल और उसके और जो अलग अलग हिस्से होंगे। जैसे हम कहते हैं कि टेक्निकल एडिटिंग में कि अगर इसको ग्राफिकल प्रेजेंट कर दिया जाए इसमें कुछ चीजें तो और अच्छी हो जाएंगी। वी हैव द डेटा एंड वी कैन प्रोड्यूस द ग्राफ्स। उसका कुछ हम डिजाइनिंग कर दें और अच्छी सी उसका कुछ पिक्चराइजेशन कर दें, कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में ले आ दें, तो वो हो जाएगा। लैंग्वेज को और कहते हैं आर्टिकुलेट और अच्छे से कर दें तो बेहतर हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं टेक्निकल एडिटिंग। तो ये भी एक प्रोसेस है एडिटिंग का। देन डिजाइनिंग, डिजाइन द क्रिएशन फॉर द पब्लिकेशन। डिजाइनिंग में क्या होता है, सबसे पहले कहते हैं कि कवर पेज डिजाइन होता है। अब कवर पेज डिजाइनिंग उस बुक के बारे में आपकी सेंट्रल आइडिया जो है वो पूरा रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उस बुक में। फ्लैट बस किताब का नाम लिख दिया वो जरूरी नहीं है, किताब अट्रैक्ट कैसे करती है, बुक्स अट्रैक्ट कैसे करती है, उसका कवर पेज कैसे अट्रैक्ट करता है, जब वो बहुत खूबसूरत डिजाइन किया जाए, उसके चैप्टर प्लान अच्छे से डिजाइन किए जाए तो वो रीडर का इंटरेस्ट पैदा करती है पढ़ने में। अदरवाइज वो रीडर के लिए यूजफुल नहीं होगा, वो उसको इंटरेस्ट नहीं पैदा करेगा उसको पढ़ने में। तो इसीलिए डिजाइनिंग ऑफ द क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिकेशन एज फार एज द पब्लिकेशन इज कंसर्न। तो पब्लिकेशन की डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिजाइनिंग के बाद प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का पार्ट ये ऑथर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उस प्रिंटिंग में फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, उसकी प्रूफ रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है। वंस इट गेट्स पब्लिश्ड यू कांट डू एनीथिंग। So check everything, every spelling, every comma, full stop before the publication. अदरवाइज ये पब्लिक में चला जाएगा डॉक्यूमेंट तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रिंटिंग के टाइम पे ऑथर को बहुत ही कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है टू गेट इट पब्लिश्ड इन ए प्रॉपर मैनर। तो प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के टाइम में इंपॉर्टेंट बात। Then distributing and recording feedbacks, distributing to the person। आजकल कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो आजकल हम प्रचार के जमाने में रह रहे हैं, तो हमारे पब्लिकेशंस को कैसे पब्लिसिटी मिले, वाइड पब्लिसिटी मिले। बुक रिलीज होती है, जर्नल्स रिलीज होते हैं, रिलीज के अलावा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होता है, ऑफलाइन रिलीज होता है, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में रिलीज होते हैं, डिफरेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होती हैं बुक, तो वहां पे। और फिर उसका फीडबैक लेना ताकि अगला एडिशन या अगला काम जो हो उससे रिलेटेड उसमें इन फीडबैक्स के आधार पे हम पब्लिकेशन को और शार्पन कर सकें और बेहतर बना सकें। तो वो फीडबैक लेना इम्प्रूवमेंट के लिए भी फॉर फ्यूचर बहुत जरूरी होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, if you are going to publish book, you need a design team, you need a sales team, you need a copyright team, you need a marketing and publicity team, as well as you need ISBN number. ISBN, you need ISBN number. Design team, looking design of the book, related with the designing of the book. Sales team is related for the sales of the book. The copyright team regarding the copyright issues and the right issues and the legal issues to take care of it. Marketing and publicity team
केवल सेल्स की टीम से काम नहीं चलेगा, मार्केटिंग टीम होती है जो मार्केट मैनेजमेंट करती है, पब्लिसाइज करती है, अलग अलग जगह पर पब्लिसिटी करती है। ऑथर ये सारे काम नहीं कर सकता है, ऑथर डिजाइनर नहीं हो सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता है, कॉपीराइट नहीं देख सकता है, और मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी नहीं देख सकता है। So you have to build a team for the publication. So this is the publication way. Designing team, sales team, copyright team, marketing team. If you want to write a good book, qualitative book, and you want to publish very good book in a different manner, then you need your team to design, sales, copyright, marketing, and etc. If you are going to publish a research article, what must be the steps? First, choose a journal. For example, Taylor and Francis. For example, any other publication. As per your area of work, बहुत सारे पब्लिकेशन है, सेज पब्लिकेशन है, रूथलेज है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, बहुत सारे हैं। पर आपके आर्टिकल के लिए, आपके पेपर के लिए, आपके पब्लिकेशन के लिए उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया में छपने वाला जर्नल है, पब्लिश हो रहा है जर्नल है, पहले आपको वो चूज करना पड़ता है। फिर आपको देखना पड़ता है कि उसके आने वाले इश्यूज जो हैं वो किन इश्यूज को लेके, उसके आने वाले जो वॉल्यूम्स हैं वो किन इश्यूज पे आ रहे हैं, और उसका क्या एरिया है, और उस एरिया में आप लिख रहे हैं तो वो कौन सा ऐसा जर्नल है जो उस एरिया में पब्लिश करने जा रहा है, और वहां आपकी पर पब्लिश होते हैं। उसके बाद आपको उसके गाइडलाइंस पढ़ने होंगे कि जिस जर्नल में आपको पेपर पब्लिश करना है उसकी गाइडलाइंस क्या है, what are their timeline and guideline, whether you will able to submit or not. Then structure your article according to the guideline of the publisher. So structuring of the article. Then writing your manuscript. Then you start to write your manuscript, because many publisher wants the manuscript of the author for the publication purpose. Then formatting your paper. Format your paper according to the need of the publisher as well as according to the need of the audience or the reader. Never, we can't do only as per the need of the publisher. We have to take care of the need of the audience as well. So formatting the paper as per the need of publisher and audience. Review it twice and thrice before the submission. And on the basis of review, enhance your paper, enhance your article and paper. Then making your submission. And before submitting, check the checklist, match the checklist, which is on the basis of requirement of the publisher. Then the peer review process, navigate with the peer review process, be conscious. Then the finally production or publication process completed when the journals come out for the readers or for the audience. So friend, this is what from our view. Now let's look finally at the publication process if you are submitting your paper or if you plan to submit your paper for any journal. The step one is what? The submission. Submission to the publisher or to the any editor of the journal or by the any process. What happened after the submission of the paper, which we call the review process? What would be the review process of any standard journal? When any author or author submitted their paper,
the first initial screening is being done by editor or the sub editor or the editorial team of the publisher, not by the peer reviewer or expert. Initial screening by the editor or sub editor or the editorial team of the publisher. What would happen? Whether every chance is to accept or to reject. If the draft will be reject, or if draft has rejected by the author, sorry, editor, it will return to the author. ऑथर को लौटा दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है कि इस बुक में या जर्नल में आपका पेपर या आर्टिकल पब्लिश होने के योग्य नहीं है या उस एरिया का नहीं है, इसलिए अगेन इट इज रिटर्न बैक टू इट इज द एथिकल थिंग. द सेकंड थिंग, it has accepted. If it is accepted, then this paper will send for the desk review. The paper will send for the desk review. What is the desk review? Screening based on the submission checklist. जो सबमिशन की चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग की जाती है. अभी भी किसके द्वारा? जो पब्लिशर हैं या जो एडिटर हैं उनके द्वारा ये चेक किया जाता है कि डेस्क रिव्यू किया जाता है. स्क्रीनिंग विच इज बेस्ड ऑन द सबमिशन चेकलिस्ट. सबमिशन के लिए जो चेकलिस्ट बनी थी उसके अकॉर्डिंगली ये पेपर है या नहीं है. ठीक है, अगर है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, इट विल गेट एक्सेप्टेड, और अगर नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा. अब रिजेक्ट होने में और एक्सेप्ट होने के बीच की भी एक चीज है, दैट इज द रिवीजन ऑफ द आर्टिकल. तो रिजेक्ट हो जाता है तो भी ऑथर को लौटा दिया जाता है, और अगर रिवीजन होता है, माइनर रिवीजन या मेजर रिवीजन, तो भी लौटा दिया जाता है. किसको? ऑथर को. अगर रिजेक्ट होगा तो फिर कोई आगे चांस नहीं. अगर रिवीजन होता है तो ऑथर उसको रिवाइज करके फिर से वापस डेस्क में भेजता है, और अगर वो जब रिवीजन के बाद या पहली बार में ही एक्सेप्ट हो जाता है तो ये सेंड किया जाता है, भेज दिया जाता है अगले स्टेप के लिए, जिस स्टेप को हम कहते हैं पीयर रिव्यू. तो बेसिकली पब्लिकेशन प्रोसेस में सबमिशन के बाद इनिशियल स्क्रीनिंग और डेस्क रिव्यू होता है. ये हमेशा ध्यान में रखिए. डेस्क रिव्यू के टाइम पे भी आपको या किसी भी ऑथर को पेपर रिवीजन के लिए दिया जा सकता है, रिजेक्ट करके भेजा जा सकता है. अब उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है पीयर रिव्यू. पीयर रिव्यू इज रिव्यू बाय द experts of the field, by the expert of that area. अब पीयर रिव्यू में क्या होता है? पीयर रिव्यू में जनरली स्टैंडर्ड ऑथर जो है वो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू करते हैं. डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू प्रोसेस. इसमें क्या होता है? अगर पेपर ब्लाइंड रिव्यू का मतलब हो कि ऑथर का नाम और उसकी पूरी आइडेंटिटी को ब्लाइंड कर दिया जाता है, यानी वो रिव्यू करने वाले को दिखाई नहीं देता है, और वो उसके पास भेजा जाता है, और उसके लिए उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है. एक स्टैंडर्ड जर्नल में जब पीयर रिव्यू के लिए कोई भी आर्टिकल रिव्यूअर के पास आती है तो उसमें 30 to 45 डेज का टाइम देते हैं उस आर्टिकल को पढ़ने और उसको रिव्यू करने के लिए. उसकी फिर रिव्यू रिपोर्ट मांगी जाती है. पीयर रिव्यू करने के बाद जो आर्टिकल होता है वो कमेंट के साथ कहां पे वापस लौटाया जाता है? या तो ऑथर को और एडिटर को. अब पीयर रिव्यू के बाद भी दो चांसेस हैं, रिजेक्ट होने का और एक्सेप्ट होने का. एक्सेप्ट विथ रिवीजन और विदाउट रिवीजन, रिवीजन, माइनर रिवीजन और मेजर रिवीजन. तो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ऑथर को पूरा भेज दिया जाता है. अगर वो एक्सेप्ट होता है, इफ इट विल गेट एक्सेप्टेड, then it will send to the editor. If there is any revision, again it will send to the author with the comment of the reviewer to review the article in the light of the comment of the reviewer. फिर वो रिव्यू प्रोसेस होती है और वो रिवीजन करके वापस वो फिर भेजता है, और भेजने के बाद फिर से उसकी रिव्यू की जाती है. देन द स्टेप 3.
That is the copy editing step. पीयर रिव्यू में क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेड विथ मेजर और माइनर रिवीजन. उसके बाद ये कहां होता है? सेंड रिव्यू कमेंट टू एडिटर एंड ऑथर. एडिटर और ऑथर दोनों को वो रिव्यू कमेंट जाते हैं और उसके आधार पर उसके पेपर के रिवीजन के बाद अगर उसको फिर से भेजा जाता है कहां पे? कॉपी एडिटिंग के लिए. ओके, कॉपी एडिटिंग. कॉपी एडिटिंग जब होता है तो उस कॉपी एडिटिंग में ग्रामर, लैंग्वेज, सिंक्रोनाइजेशन और पूरा सिस्टमेटिकली वो आर्टिकल है या नहीं है, उसमें रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, सारी चीजें, एक एक चीजें अकॉर्डिंगली चेक की जाती हैं. और कॉपी एडिटिंग के बाद अगर किसी रिवीजन की जरूरत होती है तो फिर ऑथर को भेज दिया जाता है. और अगर कॉपी एडिटिंग में कहीं लैंग्वेज ऐसी नहीं हुई जो कि पब्लिकेशन के लायक है तो वो फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है. अगेन देयर इज चांसेस ऑफ रिजेक्शन. तो अगर रिजेक्ट होगा तो फिर ऑथर के पास चला जाएगा. एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, और अगर रिवीजन के साथ एक्सेप्ट हुआ तो फिर वो रिवीजन ऑथर के पास जाता है. ऑथर वो रिवीजन करके वापस लौटाता है. तो अब वो वापस जब करता है तो उस रिवीजन के बाद एक्सेप्ट हो जाता है. तो एक्सेप्ट या रिवाइज्ड जो पेपर होता है वो एडिटर इन चीफ के पास जाता है, द फाइनल बिफोर द पब्लिकेशन. फिर एडिटर इन चीफ ऑफ द जर्नल ये डिसीजन लेता है कि ये फाइनल डिसीजन वहीं पे होता है, वेदर द पेपर विल पब्लिश इन दिस एडिशन और नॉट. और वो फाइनल डिसीजन होके फिर प्रूफ रीडिंग के लिए प्रिंटिंग के प्रेस में जाता है जहां प्रूफ रीडिंग होती है. और प्रूफ रीडिंग के बाद पब्लिकेशन शेड्यूल होता है, और जब शेड्यूल होता है तो वो पब्लिकेशन पूरा होता है. और इसी को कहते हैं द स्टेप 4, दैट इज द पब्लिकेशन, आइदर इन प्रिंट फॉर्म और डिजिटल फॉर्म. अब अगर इसको हम टाइम वाइज देखें या टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो डेस्क रिव्यू करने में 5 to 15 days. डेस्क रिव्यू यानी इनिशियल स्क्रीनिंग. इनिशियल स्क्रीनिंग विल टेक 5 to 15 days, डिपेंड्स अपॉन द publication schedule or the author, editor or the journal guideline or their policy. Second step is peer review. Peer review will take 4 to 6 weeks, and it is the external review which is being done by the double blind review by the external experts. External experts are the experts, the known person, stalwarts of the that very field or discipline. Then the copy editing will take 10 to 15 days, and copy editing is done by the internal editing team and the language team. And then the production will take 10 to 15 days. It is composing as per the journal's requirement. Composing is according to the journal requirement. You can see the differences in the articles published in different journals. So the publication time is, minimum time is 60 to 90 days. It may take an year as well, but the minimum time I am saying that is 60 to 90 days in any standard journal. So minimum time is 2 to 3 months. Be prepared for this. So it is being done, that is the initial screening. A paper has to go by the initial screening by the internal editing team, double blind peer review by the external experts, then internal and language team screen the paper, then composing team will compose the paper as per the journal's requirement. So it is not an easy task to publish a paper in a standard journal. It is a very conscious and tedious and patient job for the any writer. So publication, if we review what we discussed,
in last 1 hour and 15 minutes. We discussed about the meaning of publication, some examples of publication, the various types of publication like book, magazine, newspaper, documents, the forms of the publication, print form, digital form, electronic form, the research publication, what is the research publication, various types of publication like article, book, encyclopedia, handbook, dissertation, research report, conference proceeding, official publications, then publication through the eyes of reader, popular publication, scholarly work, and trade publication. The process involved in the writing, then the publication process, that is 4 steps process: desk review, peer review, copy editing, production. So friends, publication is a very serious phenomenon, and for the academician again it is a very phenomenon. What is the challenge before us? That people are not reading before the writing. First thing is very important, that we must have a good reader. If we read various papers, various books, we will get basic information about how to write a paper, how to write an article, how to write a research paper, how to write book, how to edit a book, and different things. Then we will very easily able to write articles or papers or book or chapters, monographs or anything. So for a good writer, for a good author, we need to read first. Before reading, we could not able to write in a proper manner. Unfortunately, few people are only writing and writing and writing. They never read. So try to publish papers on the basis of research, whether it is based on the primary data or secondary data or anything. So before writing, try to read the guidelines of the publisher, try to understand your subject in the view of the world and the modern days issues, then write a paper or article as per the requirement. Then I am very sure that on the basis of these, you will able to write a very good paper, and you all are very good readers, very well academicians. So what my little knowledge I'm trying to share, as I try to share my views with you. Maybe you, many of you are known these things, and many of you are known more than that. But I have tried my best with my limitations. Once again, I am very much thankful to organizers, and I am also thankful to all the participants for their patient listening. Thank you so much. Over to Ashok ji. Thank you, sir. Thank you very much. Dear participants, if there are any some suggestions or any questions, you can place here. You can unmute yourself. सर नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत ही नाइस सेशन रहा आपका, और रहता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा एक आउट ऑफ द लाइन थोड़ा बात करना चाहता हूँ, यानी मेरे मन में वो शंका है। अभी जो ड्राफ्ट है यूजीसी का, उसमें सर वो रेपुटेड जर्नल की बात कही है, तो ये रेपुटेड जर्नल कौन ठहराएगा कि उसका कुछ ये है क्या, यानी उसके बारे में थोड़ी जानकारी। एक्चुअली यूजीसी के जर्नल्स की या यूजीसी की जितनी भी गाइडलाइन होती है, बेसिकली वो टीचर्स या जो
फॉरकमिंग टीचर्स हैं उनके लिए होती है। द जर्नल ऑफ रिव्यू, द जर्नल ऑफ peer reviewed journals and different journals. My humble suggestion is to get always with the standard journal. और जब आप लिखते रहेंगे अच्छे जर्नल में तो वो जर्नल ऑफ रिप्यूट ऑलरेडी है। वैसे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज और उनकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो जर्नल्स की एक लिस्ट बनाते हैं कि दिस इज द जर्नल ऑफ रिप्यूट इन आवर व्यू। और ये एक बड़ा वाइड स्प्रेड एरिया होता है कि अगर ये जर्नल जो है वो यूजीसी लिस्टेड नहीं है, केयर लिस्टेड नहीं है, तो भी हम इसे रेप्यूटेड जर्नल मानते हैं, ये हमारे लिए है। लेकिन रेप्यूटेड जर्नल में जितने केयर लिस्टेड जर्नल हैं या स्कोपस जर्नल हैं या जिनके एच इंडेक्स हाई हैं वो सभी तो आते ही हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ये ऑटोनॉमी है कि वो अपने लिए जर्नल ऑफ रिप्यूट जो है वो सेलेक्ट करते हैं और वो बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टाइज। थैंक यू सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट को अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा सर एक 5 मिनट्स का ब्रेक। अगर Sir, ये I have one question. या मैम, Sir, what is the role of impact factor? Like in my college, they only accept the journals publications which has a high impact factor, like above 5, and only that is considered for the API scoring. So I just want to know what is the general rule of UGC regarding the impact factor. ma'am, UGC is continuously changing the rules, but UGC is saying that the journal of repute, the peer-reviewed journal, and the journal with impact factor, as well as the UGC care listed journal, they all included in their criteria. But it is the autonomy of the institution whether they are taking this or not. They don't go beyond the rules of UGC, but they have all the autonomy to make their own rules for selecting the candidates, either for direct recruitment or for the CAS. So few institutions which are very high academic standards, they make their own standard for that recruitment or anything else. Okay, sir. Thank you. Sir, I have Yeah. one question. Yes, ma'am. Sir, actually there are certain journals हम आर्टिकल लिखकर भेजते हैं लेकिन उसके बाद 6 महीने 1 साल 1.5 year 2 साल तक कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? ना तो Ma'am, रिजेक्ट करते हैं ना ही एक्सेप्टेड uh, बोल के लिखते हैं, तो ऐसी कंफ्यूजन रहती है, तो हम नो इट लीड्स टू अ मेंटल प्रेशर कि क्या हो रहा है, लाइक दैट। मैम ये आपके साथ भी हुआ है और ज्यादातर एकेडमिशियंस के साथ ये होता रहा है। जी सर। मतलब इट हैपेंड विथ मी ओनली, मेरे साथ भी हुआ है। तो लेकिन हम जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल और आइडियल पर्सपेक्टिव में ही करते हैं कि ये चीजें होती हैं। और जितने स्टैंडर्ड जर्नल्स होते हैं उनकी टाइमलाइन भी फिक्स होती है कि वो इतने दिनों के अंदर आपको वो रिप्लाई कर भी देंगे। पर कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ यूनिवर्सिटी कहीं कहीं पे जो जर्नल पब्लिश करते हैं और उनके जो एडिटर हैं वो रिटायर हो गए, कहीं वो और चले गए, फिर उस जर्नल की पब्लिकेशन ही कुछ दिनों के लिए ब्लॉक हो जाती है। अब ब्लॉक हो जाती है तो उसमें जितने पेपर रिसीव हुए हैं उसका कोई जवाब देने वाला या कोई नहीं होता है। इफ यू वांट टू पब्लिश द पेपर इन एनी अनदर जर्नल, राइट देम, और उसके बाद आप अपना वो लिख के उनको भेज दीजिए कि आई डोंट वांट टू पब्लिश द पेपर इन योर जर्नल बाय द सच एंड सच रीजन, आई एम गोइंग इट टू पब्लिश इन अनदर जर्नल और अदर जर्नल एंड सो ऑन। उसके बाद आप फ्री हैं, आपका वो ईमेल या आपकी वो चीजें वो बिल्कुल आप उसको सुरक्षित करके रखिए, अदरवाइज आपका वो पेपर फंसा रहेगा बहुत दिनों तक। जी सर। ओके सर, जी जी। थैंक यू सर। So dear participant, we'll take break of 2 or 3 minutes. So till stay tuned for the next session. We'll start shortly. Thank you, sir. Okay. Okay. Okay, thank you. Thank you.
इस सेशन से जुड़े सभी प्रतिभागियों को मेरा नम्र निवेदन है कि वैलिडिक्टरी सेशन के बाद आपको जो भी लिंक प्रोवाइड की जाएगी हमारी तरफ से, फीडबैक लिंक होगी, तो फीडबैक लिंक भरना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे का जो भी शेड्यूल है वो कब पूरा कंप्यूटराइज्ड है। आपको जो भी सर्टिफिकेट देना है उसी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर उसमें कुछ अड़चने आ जाती है, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आप डेली अटेंड करते हैं मगर बीच में कभी ऐसा भी होता है कि आप फीडबैक फॉर्म भरना ही भूल जाए, तो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी कि आपको कैसे प्रोवाइड करें सर्टिफिकेट। तो आप में से अगर किसी को अड़चन भी आ जाती है तो सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही, अगर आपने सेशन अटेंड किए होंगे तो। और पीछे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आपके अटेंडेंस को देखना पड़ेगा बार बार। तो मेरा यही नम्र निवेदन है आपसे कि हमारे भी अड़चनें दूर हो जाएगी, आपको भी कोई अड़चन नहीं आएगी, कि आप आज का फीडबैक फॉर्म भरना ना भूलिए। और रही दूसरी बात, हम ये देख रहे हैं कि ICSSR के जो डायरेक्टर है उनकी साइन भी आपके सर्टिफिकेट पर होनी चाहिए। इसका प्रयास भी हमारी तरफ से हम कर रहे हैं। तो डायरेक्टर से बातचीत शुरू है, आज या कल वो फाइनल बता देंगे कि उनकी साइन सर्टिफिकेट पे रहेंगी या नहीं रहेंगी। उसकी वजह से कल या परसों आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एक 8 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप ग्रुप भी लेफ्ट मत करिएगा। हो सकता है कि आप ग्रुप लेफ्ट करने के बाद आपके मेल पर या फोन नंबर व्हाट्सएप पे वगैरह हम नहीं भेज सकेंगे आपको। जो ग्रुप है अपना, वहीं पे पूरे लिंक हम शेयर करेंगे। आपको सर्टिफिकेट कैसा डाउनलोड करना है उसकी सब इंफॉर्मेशन ग्रुप में ही रहेगी। इसकी वजह से ग्रुप छोड़ने की आप जल्दी ना करें। 2 या 3 दिन तक ग्रुप में रहेगा, हम लिंक शेयर करेंगे। और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि एक 8 दिन का वक्त लगेगा हमें आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए जैसे हम चाहते हैं। तो आज के रिसोर्स पर्सन फिर से दूसरे सेशन के लिए हमें यहाँ जुड़े हैं। जो भी अनाउंसमेंट रहेंगी सेशन के बाद मैं वो अनाउंसमेंट आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, without further ado, I invite Dr. Pandey sir to start the second session. Thank you. Thank you, sir. Over to you. Thank you, Ashok ji, once again. And it is an honor for me as well as it is very pleasure to talk with all the esteemed colleagues. And the topic, as you mentioned earlier, that is the field research. To start with, I'm just starting just with a thing that what is the field? When we say the field, we have a different type of feeling and various type of meanings in our mind. A person think feels different, the other one is think different. And what is the field research? Every subject, every discipline has its own field. And research without field is not possible. So field research, though it is a type of data collection or type of research, but no research is possible without the field work or the any work in the field, whether it is theoretical or empirical or any. So field research is a type of qualitative research,
as mentioned in many books and manywhere. But the field study is being conducted in qualitative research as well as in quantitative research as well. Though, as it is written, field research is a qualitative method of data collection. Qualitative method of data collection. And the aim of the field research is that is to observe. Observe को हिंदी में कहते हैं अवलोकन. So need not to confuse with any other word. Observation, observe, अवलोकन करना. To interact, अंतरक्रिया करना. इंटरेक्शन का सबसे अच्छा तरीका होता है डिस्कशन एंड इंटरव्यू. तो group discussion, focus group discussion, and interview. And the most important thing, observe या monitor किसी और तरीके से कर सकते हैं, interact किसी और तरीके से कर सकते हैं, but without field research, we will not able to understand the people. So understanding, to develop the understanding regarding the people is one of the aim of field research. So we observe, we interact, and we try to understand the people while they are in their natural environment. Natural environment means classroom and the school ground is the natural environment for the student studying in that school. But the student is studying in school X and he or she is sitting in school Y, then we can't say that it is a natural environment. It is artificial environment. So the objective of the field research is to observe, to interact with the people and to understand the people while they are in their natural environment. For example, observing a student in a school setting, in their own school, observing employee at their workplace, and observing a patient who are in hospital for longer time in the ward, in the hospital ward. So we can also say that observing a doctor's behavior in the ward or with patient, again it is a field research. It is a type of observation. So we can always, we also replace the word observe to interact. Interact students in their school, interact employees at their workplace, interact with the doctors when they are looking after their patients, and many things. So observation, interaction, and understanding, three basic things are here in field research. Field research may conduct interviews or observe people from a distance to understand how they behave in a social environment and how they react to the situation. What is important? I'm taking a class, everything is going well. But what happened when a person, when a student trying to disturb the class and trying to disturb the other students? On that very time, we have to observe that what is the reaction of the teacher and what is the behavior of the teacher. And it is in natural environment, not in the artificial environment. So field research, the objective is of the field research is to observe, to interact, and to understand his or her behavior at their natural environment. So to study the level of the students,
to observe the routine of the student, to observe the behavior of the student, to observe the reactions of the student, to observe the discipline of the student, to observe those students who are residing in the hostel. So these are the few examples of observation in field research. Interaction with the students in the school, interaction of the aged person living in a joint family, interaction with the housewives, those who are living in the joint families, and maybe many examples we have. Interacting with employees at their workplace, interviewing them at their workplace, monitoring and observing them from distance at their workplace, you can find the actual issues and problem and the solution. Fieldwork research encompasses the direct observation, limited participation, or you can say that participant observation, analysis of documents and other information, informal interviews, surveys, etc. Direct observation. How can we do? If people knows that someone is observing them, he or she get conscious. This is not observation, and this is not going to fulfill our purpose. So unknowingly the person, if you are observing them and their behavior, this will help and this will serve our purpose. So direct observation is one of the methods. And some observations are very easy to observe. If you observe a person and at what time he or she is coming in office and what time he or she is leaving, and how many time he is busy in the official work and how many time he is not taking care of the work assigned to him or her. This is type of observation. Limited participation. Participate. You are sitting in a classroom with the student like a student. It is the participation, participatory approach, the participant observation. And then only you can understand the real situation in the real world. So limited participation or participant observation is also a very good technique of the field research, or the analysis of documents and other information. If you can check the attendance register of the student, whether he or she is attending the class or not, you can check his or her marks. You can check the copies of their internal assessment, and you will get many information. So analysis of document and other information is also a source of field research. And the informal interviews. We talk more about the formal interview, but in field research, informal interviews are quite important. Surveys, the survey conducted by the researcher to know the field, the field research. Though field research is generally characterized as a qualitative research, but often it involves multiple aspects of quantitative research, as I told earlier. Field research has many quantitative research techniques. If we try to look at the objectives of the field research is to observe and analyze the specific behavior of a subject in that setting. Subject means the person or persons. Field research is to observe and analyze the specific behavior, why he or she is behaving like this or that, why she is coming late every day. Then you have to observe her routine since morning to evening. And it is continuously for longer time. Then you will get the actual reason or causes behind her
late appearance up with the staff member, then you have to observe her routine behavior. The objective, one of the objective is also that the cause and effect of certain behavior in presence of multiple variables in a natural environment. We always used to say one thing, किसी भी व्यवहार का कोई एक कारण नहीं होता है. There is not a single reason for any single behavior. This behavior is due to multiple causes and reasons. इसके बहुत सारे कारण हैं एक ही व्यवहार के. So in field research we try to understand the various aspects or the multiple aspects of the any certain behavior in a natural environment, not in artificial environment. It is always in the natural environment. So we have two objectives: to observe and analyze the specific behavior of a person or subject in that setting, in their setting, and the second, the cause and effect of certain behavior in the presence of, to analyze the cause and effect of a certain behavior in presence of multiple variables in a natural environment. Data collection in field research is not only based on cause and effect, but mostly on correlation. Which causes are correlated to behavior? Not only a single cause, but many causes or many effects. Any behavior have many effects. Any behavior has many effects, and many causes are responsible for only one behavior. So the data collection, therefore, the data collection is not entirely based on cause and effect, but mostly it is based on the correlation. Now, let's come on to the methods of field research. First one is the direct observation. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष अवलोकन, सामने से देख रहे हैं, किसी मॉनिटर पे नहीं देख रहे हैं, कहीं दूर से नहीं देख रहे हैं. कहां देख रहे हैं? सामने से देख रहे हैं, सब कुछ विजिबल है. एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ whom? द सब्जेक्ट. वेयर? इन ए नेचुरल एनवायरमेंट. कहां पे? नेचुरल एनवायरमेंट में, प्राकृतिक उसके वातावरण में, जहां वो रहना चाहिए वहीं पे. In this, the behavior or outcome of situation is not interfered by any way by the researcher. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसका कोई भी इंटरफेरेंस सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, यानी पर्सन के साथ नहीं होता है. जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, गलत कर रहा है करने दीजिए, सही कर रहा है करने दीजिए, क्या क्या कर रहा है सब कुछ करने दीजिए. ठीक है. कहीं कहीं पे लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, पढ़ लिया तो फिर कहां नजर में है, फिर तो कॉन्सियस हो गए. तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ही और शी डजंट नो दैट ही और शी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय समवन एल्स. सो टू ऑब्जर्व इन अ नेचुरल एनवायरमेंट एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, नो इंटरफेरेंस बाय द रिसर्चर. This is the direct observation. What are the advantages? The advantage that it offers contextual data or people management situation, interaction and surroundings. ये आपको बताता है कि जो भी सब्जेक्ट है, यानी जो भी पर्सन है, उसका मैनेजमेंट किस तरह का है, उसकी सिचुएशन कैसी है, उसका इंटरेक्शन किन लोगों के साथ हो रहा है, और वो किसके सराउंडिंग्स में रह रहा है, और उसका क्या बिहेवियर उस सराउंडिंग में है.
ठीक है, सराउंडिंग इंटरेक्शन, सिचुएशन मैनेजमेंट कोरिलेटेड टू देयर बिहेवियर। अब इन दोनों के बीच में कोरिलेशन अगर है, पॉजिटिव कोरिलेशन है तो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, नेगेटिव कोरिलेशन है तो मतलब कोई संबंध नहीं है। अब वो भी कैसा है, प्रोपोर्शनेट है कि डिसप्रोपोर्शनेट है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और ये देखते हैं, यही बेनिफिट होता है, यही एडवांटेज है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का। द लिमिटेशन, वाइडली यूज्ड इन पब्लिक सेटिंग बट नॉट इन ए प्राइवेट एनवायरनमेंट। किसी के घर के अंदर जाके तो आप ऑब्जर्वेशन कर नहीं सकते हैं, यू कैन डू इट ऑन पब्लिक प्लेस। अगर आप किसी चौराहे पे खड़े होते हैं और देखते हैं लोग जो रेड और ग्रीन लाइट है इसको कितना फॉलो करते हैं, किस तरह से नियम टूटता है, नियम तोड़ने वाले किस एज ग्रुप के लोग हैं, कैसे लोग हैं, फोर व्हीलर व्हीकल से जा रहे हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं, हेलमेट पहने हैं नहीं पहने, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं पूरे दिन वहां खड़े रह के। ठीक है, यू आर नॉट पार्टिसिपेंट, यू आर ऑब्जर्विंग ओनली। इट इज द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यू आर नॉट इंटरफेयरिंग इन द जॉब ऑफ एनीवन। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, इट इज नॉट द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज वेरी यूजफुल इन मेनी मेनी थिंग्स। In many situations, direct observation is very important, and you will find the great results by direct observation. Now, the second thing, the participant observation. Participant observation is different from the direct observation. The researcher involved in the process as participant. If you are observing the employee, you are also employee. You have to act like employee. You are participant. Though the environment is natural, but the researcher get involved in discussion and could mold the direction of the discussion. एक क्लासरूम है, उसमें रिसर्चर भी बैठा हुआ है और क्लासरूम में डिबेट और डिस्कशन चल रही है, और जो रिसर्चर है वो भी उस डिस्कशन में और डिबेट में हिस्सा लेता है और फिर वो उसको मोल्ड कर देता है। दिस इज द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें एडवांटेज ये होता है कि रिसर्चर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देता है पार्टिसिपेंट को टू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड ओपन अप टू द इन डेप्थ डिस्कशन। पार्टिसिपेंट अगर ऑब्जर्वेशन है तो पार्टिसिपेंट घुल मिल जाएगा कुछ क्षण में या कुछ टाइम में या कुछ दिन में जो सब्जेक्ट है उनके साथ। और जब ऐसा होता है तो फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो कहते हैं एक्सेप्टेंस या रैपो बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और फिर उसका सब्जेक्ट के साथ रिसर्चर का बहुत इन डेप्थ डिस्कशन हो सकता है। ये इसका एडवांटेज होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बट फॉर दिस वी नीड अ वेरी स्किलफुल रिसर्चर, क्योंकि रिसर्चर विथ लेस स्किल्स will not able to do the participant observation. बायसेस आ जाएंगी और बायस्ड हो जाएगा। इसीलिए रिसर्चर को बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए और बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए, तभी वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज एथनोग्राफी। इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन by the social research and social perspective. Ethnography is the observation of entire communities, and it observed objectively
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में एक सब्जेक्ट है, एक इंडिविजुअल है, उसका ऑब्जर्वेशन पूरे उसके सराउंडिंग्स में किया जा रहा था। एथनोग्राफी में इंटायर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी है जो कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी है, और स्पेसिफिकली इस तरह की रिसर्च ट्राइब्स में बहुत ज्यादा हुई है कि ट्राइब्स की लाइफ स्टाइल को, उनकी स्किल्स को बहुत ही साइलेंटली ऑब्जर्व करने के लिए, उनकी डे टू डे लाइफ को देखने के लिए एथनोग्राफी एक बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि उसमें उसको ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करने के लिए, उसके लाइफ स्टाइल को समझने के लिए और उनकी वैल्यूज को समझने के लिए, उनकी टोटल एंटायर सोशल सेटिंग को समझने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि एथनोग्राफी का यूज किया जाए फील्ड रिसर्च में। तो इथनोग्राफी हैज द डायरेक्ट एंड ब्यूटीफुल इम्पैक्ट इन द फील्ड रिसर्च। इथनोग्राफी अगर अच्छे से कर लें तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। और ट्राइब्स पे रिसर्च करना हो, एजेड होम में एजेड के ऊपर रिसर्च करना हो, या प्रिजनर्स के ऊपर रिसर्च करना हो जेल के अंदर पर, तो ये एथनोग्राफिकल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एथनोग्राफी की जरूरत है। देन क्वालिटेटिव इंटरव्यूज, नॉट द क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। पूछते हैं आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी आयु क्या है, ये तो क्वांटिटेटिव इंटरव्यू हो गया। क्वालिटेटिव इंटरव्यू, इसमें गुणात्मकता की बात होती है। Qualitative interviews are the close-ended questions that are asked directly to the research subject. और उसको डिस्कशन के लिए आप एक तरह से डैशबोर्ड दे देते हैं, बस उसका इंटरप्रिटेशन बेहतर होना चाहिए। If you will not be able to interpret it in proper and effective manner, it will be useless. तो रिसर्च सब्जेक्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, और उसके क्वालिटेटिव आंसर्स ढूंढना और फिर उससे इंटरप्रिटेट करना, दिस इज द टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। दिस कुड बी आइदर इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल, सेमी स्ट्रक्चर्ड, क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और मिक्स ऑफ ऑल above three: semi-structured, standardized, and open-ended question. Questionnaire may be mix of three, or any two, or any one. It is helpful in collecting the rational data from the subjects. Qualitative interview. Qualitative interview helps the researcher in collecting the relational data. Relational data, data related to the other characteristics or other. Qualitative interview can use a mix or one-to-one interviews, focus groups, and text analysis. क्वालिटेटिव इंटरव्यूज में हम वन टू वन इंटरव्यू कर सकते हैं, मिक्स ऑफ वन टू वन इंटरव्यू कर सकते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यू कर सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं, और टेक्स्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव इंटरव्यूज में जो इंटरव्यू निकल के आए हैं उसके जो टेक्स्ट है उसकी एनालिसिस करके भी इंटरप्रिटेट किया जा सकता है। फील्ड रिसर्च का एक मेथड केस स्टडी भी है। केस स्टडी हम लोगों ने पहले बहुत लंबी बात की है इस पे, एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए पर्सन, सिचुएशन और इवेंट। तो केस स्टडी इज आल्सो अ टाइप ऑफ फील्ड रिसर्च। तो कितने टाइप्स हो गए जिनकी बात हम लोगों ने की फील्ड रिसर्च में? वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इथनोग्राफी, क्वालिटेटिव इंटरव्यू एंड केस स्टडी। ये सभी मेथड यूज किए जा सकते हैं फील्ड रिसर्च।
केस स्टडी के बारे में पहले बात करते हुए चूंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सो नीड नॉट टू रिपीट अगेन, so we should move to the next phase, that is the steps of field research. The first step of field research means from beginning to end, how to conduct the field research. So the first one is building a right and effective team of the research. Field research is basically a teamwork. One cannot do research alone in the field. A person need a team to conduct the field research. So for this, the next step is selecting people for the study. So for the field study, the researcher has to select the people for the study to whom they are going to study. Selecting proper sampling method to select the people that will be a part of a study. Selecting proper sampling method, taking proper sampling method to select the people that will be a part of the study. Proper sampling method का use करना as a part of study, ये भी एक हिस्सा है कि प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड यूज करके सही सैंपल ड्रॉ किए जाएं जिससे सही सब्जेक्ट की एनालिसिस हो सके. Next step is data collection methodology of data collection in the field research. Data collection method in the field research can vary, and it have the various. It could be mix of survey, interview, case study, and observation. It may be one, and it could be mix of survey, interview, case study, and observation. Mixed method are always lengthy but very useful. It is tough, lengthy, but useful and effective. So in data collection methodology, one can use the mixed methods of survey, interview, case study, and observation. Otherwise, only one can be used, two can be used, three can be used, as the resources and the requirement. Okay. Next is, and which is very, very, very important, that is the site visit. And site visit in actual environment, in natural environment. Site visit where the subjects are available in their natural environment. Why site visit is important? Without visiting the site, you cannot predict, you cannot observe. So either participant observation or anything, and the researcher has to go to the site. So if we want to observe the person in natural environment or to analyze the subject in natural environment, we have to do site visit. Site visit is the next phase of the field research. After that, data analysis. Data analysis in any qualitative research is the most difficult part of the research. Interpretation and data analysis is quite difficult and tedious job in the research, specifically field research. Analyze the data on the basis of observation, participant observation, and first we need the bias-free researcher. To fulfill the purpose of the research,
it is necessary that researcher must be free of bias. So to analyze the data without bias, with the help of the statistical tools, is important. Then communication of results. Not only the field research is not only limited to the data analysis, conclusion, or interpretation, it is up to the communicating results to the whom? The stakeholders of research. For example, in the case of school-going children, the stakeholders are students, their parents, their teachers, school administration, the concerned ministry, the concerned department, the policy makers, higher education, many things, all the stakeholders. And stakeholders, even the publisher of the book. So communicating the result to the stakeholder. If you are studying the older person, the ministry and department and the policy maker responsible for the policy programs and the rules and regulations for the agent, they must communicate the results of that research. So communicating the results to the stakeholders is a very important part or very important aspect of the field research. Then field research notes. Field research notes is again an important step, whether it is first or second or third, I don't know where it is fitted, but field research note is a step. Field notes make up one of the most important aspects of the ethnographic record. To maintain the record or as a base for the future research, the field research notes making is an important phase, or we can say it is a phase or a step of the research. So we have few steps: building a right and effective team, selecting people for the study, or we can say the sample selection, data collection methodology, site visit, data analysis, and communicating results to the stakeholders and the field research notes. These are the few steps of the field research. Now, let's talk about the types of the field research notes. How, why we make the field research notes, and what are the types. Field research notes is the important aspect of ethnographical records. To maintain the record, we need the field research. To get on any conclusion, we need the field research notes. For the analysis of data, we need the field research notes. So the question arises, what are the types of field research notes? We have few types of field research notes. The first one is job notes. Job notes are the notes taken while the researcher is involved in the study. He or she observing or participant observation or informal interviews or anything. The researcher, it is expected from the researcher that he will take notes while he is involved in the study.
उम्मीद की जाती है कि वो उसी समय एक नोट तैयार कर लेगा। हालांकि वो नोट छोटा होगा और बड़ा, कहेंगे कि एक ऐसी लैंग्वेज में होगा जो सांकेतिक भाषा कह सकते हैं उसको, लेकिन होना तो चाहिए। नोट्स कैसा होना चाहिए? जॉब नोट्स शॉर्ट, कंसाइज एंड कंडेंस्ड। छोटा होना चाहिए लेकिन बहुत ही समग्र होना चाहिए, और उसमें सभी चीजें आ जानी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। हालांकि रिसर्चर जॉब नोट्स बनाने से बहुत डरते हैं, फीलिंग फियर, feeling fear of not taking risk, feeling fear because job, in preparing of job notes, the researcher feeling fear of not taking this, feeling fear that the respondent may think that the researcher is not taking him or her seriously. So what is job notes? Job notes are the notes taken by the researcher while he or she is involved in the research process, like observing, participant observation, direct interview, or informal interview, or any other process. This note must be short, concise, and condensed. The job notes must be short, concise, and condensed. But what are the challenges? Researchers feeling fear because they always think that if he or she taking the notes or job notes, the subject may think that the researcher is not taking his or him seriously. उसको लग रहा है कि रिसर्चर उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, बस बात कर रहा है, वो तो लिखने में बिजी है. So do job notes, taking job notes is a challenging issue. Therefore, it is a skill of a researcher how he or she maintain the job notes. Okay. The next type of the field research notes is filled notes properly. What is the meaning of filled notes properly? It is the expanded notes immediately after the completion of the event. It means when the event's completed, means case study completed or observation completed or participant observation completed, or whenever he get the break, she must prepare immediately a note which is called proper filled note. And proper filled notes means each and everything which is important must be noted there. जैसे ही इंटरव्यू कंप्लीट होता है वैसे ही एक नोट्स प्रिपेयर करना. But nowadays it is quite easier because the whole process may be captured in camera. Even the voice can be captured, recorded, so that it is easy for the researchers to listen the voice again. But it is very difficult in the natural environment. And when he is alone, it is more difficult. So that's why I'm saying that for these things, we need a very skillful researcher, as well as the training of the researcher is very important. So fill notes properly. The notes have to be detailed. It is an expanded note and it has been taken immediately after the completion of the event. Event means here
observation, direct observation, participant observation, informal interview, case studies, whatsoever. Next one is methodological notes. Methodological notes contain method on the research method used by the research. Methodological notes is it contains what is in the methodological note. Methodological notes contains the methods on the research method used by the researcher. What type of research method is being used by the researcher in this field research? Okay. It refers the research methodology basically. Then another type is journals and diaries. This journal is not that journal in which article is being published. For example, in our subject instance, my subject, that is, there is fieldwork journal. On the fieldwork journal, the student has to take the notes, or the student has to write, or the fieldwork diaries, in which he note down the concerned thing. So fieldwork journal or fieldwork diary, or you can say field journals or field diaries. So an insight into the life of the researcher. These journals and diaries insight into the life of the researcher. This tracks all aspects of researcher's life and helps eliminate the halo effect or any research bias. This insight of the researcher will able to halo effect, to eliminate the halo effect or any research biases of the researcher. So journals and diaries, fieldwork journals and diaries are very important type of the field research note. So we have we talked about the 4 types of field research notes. First one is job notes. Second one is field notes properly or proper field notes. Third one is the methodological notes, and fourth one is the journal and diaries of the researcher, which clarify the insight regarding the life of researcher, and this is helpful in eliminating the halo effect or biases of the researcher from the study. So friends, these are few things about the field research. Now, the question arises, why field research? What are the reasons to conduct the field research? And not many, but there are few reasons to conduct the field research over the other research methods. Field research are conducted to overcoming the lack of data. Through the field research, we can generate the data. And this data is very original, rare, and valid. So if any researcher involved in the field research, he can generate the data, supplies the data, and it is helpful in overcoming the lack of data in any research. And what, especially in social sciences, we are lacking the data from the field. Second one is understanding the context of the study. To understand the context of the study, we have to go in the field, site visit, and then we can contextualize the study. So to understanding the context of the study, we have to conduct the fieldwork research. Then we have to increase the quality of data. And if we
meet the increased quality of data, we have to conduct the field research, because the data from the field is qualitative in the nature. It increases the quality of the data because it is the primary source of the data collection. And by observing, by participating, we find the qualitative data. So the field research increases the quality of the data. The data we derive from the field study is the qualitative data. The next one is collecting auxiliary data. The data which has not found by anyone, and it is the collection of very new data, auxiliary data, and ancillary data. By ethnography, we can get many type of data which is not possible by any other method of the research. So the reason to conduct the field research are the overcoming the lack of the data, to understand the context of the study, to increase the quality of the data, and to collect the ancillary, auxiliary, and original data. Now, let's look what are the advantages of the field research. The first advantage and the most effective advantage is the field research is conducted in real world and natural environment. The real time data, the real world, and the data collected from the natural environment, not from the created or artificial environment. It is in the natural environment and the first-hand data from the real world and natural environment. So it is the reliability of the data is important. That's why the data from the field research is very effective, because it is primary, it is from the real world, it is from real world and natural environment. So this is the, I can say, the most effective advantage. Second thing, since comfortable environment, since the respondent feel the comfortable environment, data can be collected even about the ancillary topics. The rapport building between the researcher and subject are very comfortable. Therefore, to collect ancillary topics and data is very easy for the research, which is not in the formal interviews. It can only be in informal interviews or in ethnography or in direct observation or participant observation. Another advantage is research. Field research is extensive, thorough, and accurate. It is extensive, widespread, on bigger canvas. It is a thorough research on different dimensions. It covers various dimensions, and it is accurate than any other research. Friends, we can count more advantages, but these three are most important as I gone through the different advantages. So what are the advantages? We can recap: conducted in real world, natural environment, real time, due to the better rapport building with subject
or respondent. The data can be collected even about ancillary topics. And another one is research is extensive, thorough, and accurate. With these advantages, there are some limitations of the field research as well. Field research is quite expensive because it takes a lot of money, time, and manpower. It is time consuming as well. For participant observation, for informal interview, case studies, it's time consuming process, time taking process. So we need more time. If you want to do research in a limited time, field study is not a good option. It is very difficult for human being to be bias free, and researcher is a human being. So it is difficult for the researchers to be biasless, bias free. Biases of the researcher always affect the study. And many nomenclature used by the researchers in their notes are very tough to follow or to interpret. Therefore, the interpretation and following of notes are very tough. And it is almost next to impossible to control the external variables in field research. External variables आ ही जाते हैं, कितना भी कंट्रोल कर लीजिए आ ही जाएंगे, इसलिए इससे अलग नहीं हो सकते हैं. So it is not possible to control external variable. And if we try to control the external variable, then it will not remain the natural environment or real world. Again, it will become artificial. Therefore, the effect of external variables will also be a limitation of the study. So friends, if you recap the limitation, expensive, time consuming, required more manpower, difficult for the researcher to be bias free, nomenclature in notes is very tough to follow, and impossible to control external variables. These are few limitations of the field study. If we talk about the study of indigenous tribes, it is essential to do the field study. If we have to do the study of wildlife tracking, again field research is essential. If we want to observe the consumer behavior in the studies, again it is a field research. If we want to see the relation between teacher and taught, we have to conduct the field study. If we have to do any research on agriculture farmers, we have to organize the field research. So in many cases, field research is essential method. Therefore, field research is very important part of the research, qualitative research or quantitative research. The field research, we can found the field research across different disciplines: anthropology, history, sociology, social work, economics.
many subjects and in many disciplines. As I started and said earlier, that field research may be qualitative and quantitative and mixed methods. And it depends upon the researcher how he or she is taking the field research. Analysis thematic analysis and narrative analysis. Those who are from the psychology background, they better know what is thematic analysis. And other also know it is a thematic analysis and narrative analysis. So it is a pre-requirement or prerequisite that the researcher must know the thematic analysis as well as the narrative analysis. If you want to understand the impact of sports on the development of the child, you have to conduct the field research. If you want to understand the migration of animals, again you have to do the field research. With the thematic and narrative analysis. So one should know the thematic analysis and narrative analysis. And the thematic and narrative analysis are the entire different topic. You can read, many one knows what is the thematic analysis and what is the narrative analysis. So friends, in the field research, many things to say, but right now, I have tried to briefly introduce the field research before you. Many of you have done the field research. Many of you are going to do the field research, and definitely many one will do the field research. But for doing the field research, the biases as well as the intent of the researcher is very important. Those who are interested in field study, only they can do the field research. किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है. No one can be bound. और अगर ऐसा होगा तो वो field research effective नहीं हो पाएगी. So again, look at the aim of the field research. It is to observe, to interact, and to understand the people in real situation or natural environment. All the methods is to observe. An observation is very important to solve any problem or to find solution of any issues, specifically the rational issues. हेलो सर. Yes. हाँ, एक क्वेश्चन है सर. Yes, बताइए. फील्ड में जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो हमें डाटा चाहिए वो कभी कभी रिस्पॉन्डेंट से मिलता नहीं है, तो तब क्या सिचुएशन करना चाहिए? एक्चुअली डेटा, यही तो बात हम कह रहे हैं ना कि जिस ऑब्जर्वेशन की बात आप कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट, it is one of the method of qualitative research, that is observation with interview. ऑब्जर्वेशन में तो डेटा क्रिएट हो ही जाएगा, वहां पे नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है. द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का तो सबसे यही है कि वी आर ऑब्जर्विंग द सब्जेक्ट इन ए नेचुरल एनवायरमेंट.
आप जिस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं वो तो तब होगा जब वो सब्जेक्ट आपका कॉन्शियस हो जाएगा कि उसको जो करना है वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में करना है। व्हेन ही और शी इज डूइंग हिज ड्यूटीज और वर्क इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, तो आपको जो डेटा चाहिए वो तो मिल जाएगा। क्लासरूम में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और ये स्टूडेंट को नहीं पता है कि उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो तो नेचुरल एक्ट करेगा और वही उसका नेचुरल एक्ट होगा। अगर उससे डिफरेंट हमें कोई डेटा चाहिए तो वो फिर तो डेटा मैनिपुलेशन हो जाता है। ओके सर। तो what I was saying actually, that to observe, to interact, and to understand the people. Field research is not only the observation or interaction, it is the understanding of the people and their behavior in the natural environment and the real world situation. If we will able to understand the behavior of the individual by the observation or by the interacting people, the purpose of the research will solve. What we try to investigate, that is to understand the people and the situation. And if we will able to understand the people and situation, the purpose of the research will solve. That's why the field research is important, and that's why it is given so much importance in nowadays or in the modern days of the research, to create the data and to analyze the data, to narrate the data. And it is not only creation of the data, it will help to do the further research. It will create a gateway for the newer research on newer topic. I hope I did justice with my topic. If not, please give me the pardon. I tried to explain. Otherwise, if any query, I'm here to answer. Otherwise, we will meet again. And now over to Ashok ji. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, there is one another question in pop-up window, message Yeah. window. Mhm. So, do we need any parameters while observing, or should be an open-ended? As I told that it is open-ended, but I also told that it is used in qualitative and quantitative data. Sorry, quantitative method, both type of research. If observation is in quantitative type research, then we need the parameter. But observation as a qualitative research, it is open-ended. Because just I can take an example. If you are doing a participant observation, no parameter is required. But if you are doing observation for certain purpose, you need some parameters. Any another question? Or also there are. Sure, I have one more question. If you Yeah. permit, I'll ask. Sir, can you suggest some tools for the qualitative research for analysis purpose? Like we do observations and other thing, but we become handicapped while analyzing all the data we have collected through observing and other sources. So, any significant tools for analyzing the qualitative data you can suggest? Ma'am, basically, I told you now, this is the basic problem, because all statistical tools were made for the qualitative analysis and qualitative data. When we go through the qualitative data, and we have to use the same tools and same thing. There is ANOVA, regression analysis, correlation. But if the researcher is biased, the whole process go in the hell. Therefore, the statistical analysis is very, I can say it is very risky thing, or I can say it is very dicey
कि which type of analysis is appropriate for qualitative analysis. I don't have any answer right now. Okay, sir. That is actually a very big problem because I am facing that nowadays same problem. qualitative research is in trend, and we lack good tools for analyzing the qualitative But data. my friends from statistics, they are working, and I hope very soon we will get some answer because I am working with my friend of statistics on the same thing to how to analyze the qualitative data in better manner with valid statistics. And definitely, Okay, we sir. will find something very soon. I'm sure, sir. Thank you, sir. So with this, we'll go to the conclusion. मैं सर एक बात कहना चाहूँगा जी कि हम बहुत ही खुशनसीब है कि जो आपको दोबारा सुनने का हमें सौभाग्य मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि आपके जैसे महान वक्ता को दोबारा सुनना, इसे सौभाग्य ही चाहिए। हर किसी के नसीब में नहीं है कि बार-बार किसी एमिनेंट पर्सनालिटी से कोई एक्सपीरियंस साझा करना, उन्हीं से कुछ सीखना। तो मैं मानता हूँ कि हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड, बट ऐसा कुछ है नहीं। आई एम द सेम पर्सन लाइक यू एंड अदर्स। बस जो पढ़ते हैं वही आपके साथ शेयर किया है। स्टिल आई एम स्टडिंग एज आई टोल्ड कि अभी इस पे काम कर रहे हैं। शायद 1 साल बाद मिलेंगे तो कुछ और नई चीजें होंगी, अभी तो सब कुछ चलता रहेगा। इट्स अ जर्नी एंड इट्स वेरी नाइस टू इंटरेक्ट ऑल ऑफ यू। सर डेफिनेटली इन आवर जर्नी यू आर द प्रोमिनेंट फॉर अस। नेक्स्ट टाइम थैंक यू, जरूर आपका पहला सेशन रहेगा सर। हमारा दोबारा जब भी वर्कशॉप हम शुरू करेंगे तो पहला सेशन आपका ही रहेगा। ये थैंक यू सो मैं मच। आज ही कहता हूँ आपको। और एज ए प्रोटोकॉल आई इनवाइट डॉक्टर पूर्णिमा चंदानी मैम to propose vote of thanks for the session। और इसके पहले सर मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। जी, आज 3:30 बजे एज ए फाइनल डे हमारा वैलिडिक्टरी सेशन है। अच्छा अच्छा, ओके आप सर, जो लिंक भेज दीजिए, आई विल ज्वाइन श्योर। होगी हमें अगर आपके पास टाइम हो तो मैं प्लीज। ज्वाइन करूंगा ओके ओके सर, डेफिनेटली। ठीक है, मैम ओवर टू यू। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस। आज का 10वां दिन है। आज राष्ट्रीय स्तरीय अनुसंधान प्रणाली कार्यशाला के अंतर्गत पहला सेशन पब्लिकेशन प्रोसेस और दूसरा सेशन में फील्ड रिसर्च, ये दोनों ही सेशन में आदरणीय डॉक्टर पांडे सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा किया। सर, प्रस्तुत विषय में आपका गहन अध्ययन है। आपने बहुत ही सरल और सहज भाषा से हमारा ज्ञान बढ़ाया है। सर, श्री सरस्वती समाज कार्य महाविद्यालय की ओर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और भविष्य में आपके मार्गदर्शन का मौका हमें जरूर मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद आपसे रखती हूँ। आज सम्मिलित सहभागियों की ओर से गवाही देती हूँ कि सभी सहभागी विद्यार्थी अपने कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा मिला हुआ जो ज्ञान है उसका उपयोग जरूर करेंगे। आज के सेशन में सम्मिलित राज्य के सभी सहभागी प्राध्यापक और विद्यार्थियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं आज सहभागी विद्यार्थियों के लिए कुछ मोटिवेशनल शब्द या कोटेशन कहना चाहूंगी। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। सहभागियों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा।
ऐसा मैं आपके साथ उम्मीद रखती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी टेक्नीशियन टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ में आयोजक टीम का भी मैं श्री सरस्वती समाज कार्य महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ ही हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल एस.एन. शिंदे सर और वाइस प्रिंसिपल, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए अगले प्रस्तुतिकरण के लिए मैं श्री अशोक कुमार वाघ जी को मैं हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। डियर पार्टिसिपेंट, हम तीसरे सेशन के लिए दोबारा जुड़ेंगे 1:40 को। तब तक के लिए गुड बाय सर। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।